Okay, se YouTube ki link su group ta share tawrabani ko. And how's it? Let's start. So, ngarang baw da khoi question kaya baw no discuss tawr me je question khara dia khoi discuss tawre ko. Section A loram dribo male question number 27 baw discuss tawgiba. So ngasi question number 28 tagi discuss tawa horozi. Let's continue. Lo shalaji ngasi. Nagi question scan tawdri ko. Aduna scan ngasi akheng balai tawrage. Nang dragana hayeng ko. Hayeng adum result haidum na batawge. Discussion loiraba adagi nangi question scan tawbo loiraga dum loire. So far Saga to time. Okay, ngarang question number 27 book discussed over ko. We have discussed till question number 27. Question number 28 tagi discussion tabo horoji. Question number 28. Let's start. Let's start. Introduction. Introduction. Okay, question number 28. Horoji question number 28. Question number 28 hai again. Okay, test number 12 ke question discussion ni ko ko ngasi toise. Ngarang horame section A bhawa discuss tawre. Section A ki part khara bhawa. Good. So how is it? Question number 28. Question number 28 has have two satellites of masses m and 2m. Sorry. Kumagihara. Good. Bye bye. Two satellites of masses m and 2m are revolving around a planet of mass m with different speeds in orbits of radius r. See orbit ki radius see nagi r orbit sigi magi mass na m ni aduga 2r gisana 2m ni. The ratio of minimum and the maximum force on the planet due to the satellites of the satellites in the pirakadaba planet to the different nagi conversing to put over yung ahan bade yung ani sida different speed ta ungi vanina yung possibilities adi mana put over is minimum and the maximum force mass planet to madi lenghal urano satellites in the ungdore karam kan the force minimum orakani when the two satellites say sinagi satellite 1 hairone which is of mass m aduga amaduna se kitang lapthok na satellite 2 hairo ani suba satellite 2 of mass twice m mako is opposite oinarakanda namdi animang na mass m hairiba nagi satellite kan planet se chingai hona toini force ama somda lani amana somda chingingai hona gani since they are opposite of the net force will be ani dugi subtraction oira subtract orani C kind of minimum force phangni have net minimum oigada karam kind of maximum oideba suppose nangi satellite to satellite animak to same side ta adu sunangi same line da lairamaba yaraba same side ta sunangi same line da lairamaba then we will have the maximum force mam the animak na ching doini na so c na su chinge adai nangi 2m na su chinge understand doroba ad f minimum hana puthoksi first case da F minimum kya oini nagi ngasagi satellite 1 na chingdori force maming do tholasine let us call this F1 satellite 2 na chingdori force F2 ani do subtraction oiroidro since they are opposite khaidong naro so equals to nagi F1 minus F2 hairazi F1 di kaino G times mass ani ki product M and M achauba ko planet to gi
divided by r square minus g times 2 gidi keno magi mass twice m mass m achauba divided by twice r ka whole square yani abo adu sidi horen last kya tani simplification tawro makada 4 lani 2 kaktan naraga half lani so sidagi half khaido khita gadi half tarani g m divided by twice r square tarani yani aba twice r square. That is the maximum force. That is the maximum force. That is the maximum force. Sorry, minimum force. That is the minimum force. Now let's talk about the maximum force. Maximum force hadi animal direction amata the laidoram nina. F maximum will be F1 plus F2. Sida kitang samjan ke sida dum plus tok salamji minus ki mauta plus 1 dona tro. Adina ge 1 plus half the 3/2 tarani so it will be 3/2 g times of mm divided by r square. अनिसिगी रेशियो नहीं नो है बनी ना f minimum divided by f maximum अब क्या तारा है सीधा 1/2 ले हो रही सीधा ना 3/2 कल नड़ी क्या तारा है 1/3 so the answer should be 1/3 answer should be 1/3 यार अब answer should be 1/3 फिर से पेन नंग प्रोग्राम आने ने फिर से पेन नंग ग्यारह ट्रेनिंग आगे मनाक सीधा पेन नंबर वो है ले होती है फिर पेन ले लो रुके को सेम तंग मार्क तो होना ओके यार तो सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या था रहा है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी यार रवा ऑप्शन नंबर सी गुड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 से हाउ इज क्वेश्चन नंबर 29 the art is assumed to be a sphere of radius r a platform is arranged at the heights from the surface of the art escape velocity of a body from this platform is f times v is the escape velocity from the surface then the value of f is यंगो सिदा कोई नमान करी हाइरिबा सरफेस सिदगी खरा हाइट अमदा हाइट अमा वांखलगा लेबे जगह अमा खक्ता मागे हाइट से क्या r रेडियस का माने है r कखला लेबे जगह अमा खक्ता प्लेटफॉर्म अमा सारे हाइरिबा प्लेटफॉर्म सिदा नगी स्पीड तो लॉन्च साउंड तोरे मागे इसके वेलोसिटी दो so this escape velocity is क्या है बस है v f times v where v is नगी escape velocity from the surface नहीं सरफेस तक काकोलक पनगे escape velocity तो v नहीं हारे माना this is escape velocity अदे करी हंगे बस ये f से कई माना गया है बनी अखोइना खंगे करीगुंबा escape velocity अमसुंग इन maximum height द base तो क्वेश्चन होला दी energy conservation पालो हारे माजे आ infinity वो योगी तो इन escape तो गिदोर मिना let us call this number 2 at level 2 energy conservation total energy at 1 जिगा total energy at 2 को माना गदा यानी अब ममांग द खोइना हंजिन हंजिन द हाइग्रबनी करीगुंबा खोइना escape velocity अमदा करीगुंबा ऑब्जेक्ट अमा काखत के हरडी exactly at escape velocity होइदो exactly नंग escape velocity द काप तारगदी total energy must be zero हाइ गिवन कइदो बैनो हाइबो सिदे दुम हाइ राजे से अमुका 2 हाइरिबा जगह infinity ददी u2 plus k2 क्या तान हेरो infinity ददी potential zero infinity द लेफ्ट तोर में kinetic zero so in short escape velocity देबो launch तौगे हरडी its total energy must be zero at that point to the ground दे कापगना ground की total energy zero होइदौबा अदुगा नंगी height अमदे कापगना total energy zero at that height total energy हरडी potential plus kinetic नहीं total हरडी potential plus kinetic नहीं so it must be क्या zero potential हरडी height से ददी minus gm m मचा divided by नंगी r plus heights 2 तो heights 2 सीधा मान r है रे plus kinetic दे half m मागी v that is v f v square f v square यार वो it is equals to 0 now सीधा कह ले रहे माइनस m मचा मचा दो का करो थांगदोक थांगन सानरो माइनस का जो तुम चला दी पॉजिटिव वन में आ रहा है so gm by twice r will be equals to नंगे half f square v square half जो का करो अदे मान पामिने escape velocity कदा इदा on the surface of r ता on the surface of r ता escape velocity करेंगे माने
ऑन अर्थ सरफेस अर्थ की सरफेस नंगे इसके वेलोसिटी करिए मानी इसके वेलोसिटी भी ना रिप्रेजेंट तो है it is nothing but root over twice gm by r नी अब सिदा खोना gm by r है ना सिदा यावरिसे अखोई कई इबे आ रहे सिदा ममांग दसु हंजन जिन होत खरबनी अदो अमतक होलसी स्क्वायरिंग तौसलो twice gm by r लानी gm by r सिदा कई के मान रहे b square by 2 where b is the scale velocity अब सिदा सिंजलो दी क्या तानी so therefore gm by r है दी कई के मान रहा b square by 2 and it should be equals to f square v square b square का खरे अब f square है दी f तो क्या था मनी 1 by root 2 so f is nothing but 1 by root 2 क्या दागद्रो and any नगी escape velocity अमद launch तौरे वो हेक हाई रहा any जगह अमदगी surface और भी आई height अमदगी और भी आई exactly at escape velocity द हेक launch तौरा जगह दुदा total energy zero total energy must be zero अदे तुम होत खो अदगी अमना escape velocity अमसुम maximum height base तो वो क्वेश्चन हंगाबा अदो इतारगदी always use energy conservation. Question number 30 kinetic energies of a planet in an elliptical orbit about the sun at positions a b c दिखा रहे good अब this सीधा like position में आमदा कदा वाइज जगह दा kinetic फायदे की सावधा के हवे kinetic हाडी velocity ख्वाई सावधा जगह दनी कोई ना हाइग्रे ख्वाई दगी नगी nearest point that is as the distance of the planet from the sun is smaller or nagi nearest near speed speed hengalakani havani so since a is the nearest point noi satram kana hangi sir kamai khang doino b ju yam nakpa mali ellipse की property निको से this is the nearest point a is na तो kwai lapa jaga na kari c and a na kwai lap na abani na since a is the nearest b a duna b b degi chauni aduga b c degi chauni भी साउथर दी काइनेटिक एनर्जी साउथर मरम दी सेम स्पीड कनोनी मास नहीं सिदा लेबा 8 की मास सिदा लेबा 8 की मास सिदा लेबा 8 की मास आई सिदा लेबा 8 की मास ऑफ द प्लैनेट दी होंगरोय भी साउथर दी काइनेटिक एनर्जी साउथर सो के ए इज ग्रेटर देन के बी इज ग्रेटर देन के सी सो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी यार वाज गुड ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 at what height from the surface of the earth the gravitational potential and the value of gr acceleration due to gravity and नगी करी acceleration due to gravity ने potential ने value जगह हम खत्म है value पी रहे हैं और height to क्या कोई कहता है कि हाँ radius of the earth ने सी लोअर है suppose 31 ये को suppose नगी surface ले रहे हैं height हम काखल ले हार का height जगह से था माई पोटेंशियल ना क्या पोटेंशियल की फॉर्मूला तो माइनस जी एम बाई आर निको आर प्लस हाइट्स आर मचा लो दो बार सी वैल्यू से माइनस 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7 है अमना जी एट दिस हाइट जी एट द हाइट है जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर एजुम्शन लो रनु माई जी नगी आंसर द येंग बक कांदा कोई करी हारे फन्याम यार बस चावरे तुम फन्याम चावरे अदुना कोई के दौरानी g divided by 1 plus h by r square सी कई मान रहे हर बमाना 6 नहीं है 6 now अदो इतारगदे अन्नी के इंफॉर्मेशन सितगे आई करी पुदोक तो h पुदोक तो नहीं h पुदोक तो पुदोक ना होना जी now हां बदा अन्नी से स्माइट तोगे अन्नी से आई सितगे आई स्माइना को gm by r square नगी g रोम दम द एक्सप्रेस तोगे सी b की दगी p रिबा b से g द एक्सप्रेस तोगे कमाइना माइनस उदे तुम कखरो सितगी gm by आई सदा g मचा है बजे gm by r स्क्वायर ने अदु तहाने बसिनगे कमाई बियारे gm by r स्क्वायर डायरेक्ट इसलो r स्क्वायर दु सदा लौथो हान यावजर r प्लस हाइस तुम थंबीरो याबना तो सिबाउदा इक्वल्स टू नंगी सदा 5.4 into 10 to the power 7 now अदु दिस सी g मचा लेग रहे so it is nothing but g times r square divided by r plus height equals to 5.4 into 10 to the power 7 equation number 1 sini equation number 2 ani se tolong divide tau no 1 divided by 2 already adu kya tani sidi nagi ngasagi g ka khrani the c g ne 2 si joi phazan am the express tarongge
r plus height sin si thamaga r je mathak chalaga nangi g r square habe yado ni sisu na r plus height ka whole square it is equal to 6 because equation number 2 अब ani se divide tawna di g r square ka khre अब matakta r plus heights le horani makhadana r plus heights ka whole square सी के माना गदा बा नंगे 5.4 into 10 to the power 7 दुदा kana divide tawde बा नंगे 6 ना अब सी जो मोना की कक्तत खोदना तोरगा r plus h मथक तो लंगानी 6 ना सीधा का दी क्या तारा 0.9 ना तो 6 9 54 नी into 10 to the power 7 0.9 से मीटर निको तारक पे माइ से कहनो मीटर किलोमीटर मीटर डनी को पीरी में हम सिंह से मीटर डनी so see meter ni se tari se meter ni so let's convert this into kilometer kilometer da convert tawge hardi 0.9 10 to the power 3 em thamamo aduga 10 to the power 3 dun kilometer on tho r plus h adu loy namak kilometer da all hai adu height subject ke mana se punchal adi kya tani 900 minus kano to isu sorry so 10 to the power 3 em sa ki taga 10 to the power 4 le hota so 9000 minus 6400 kilometer अब क्या ताने हरो नंगी सीधा 6 7 लाख 2000 लाओ 6 लाओ 2600 किलोमीटर so the answer is 2600 kilometer so the answer is 2600 kilometer यार अब यार अदरो ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज ए नाउ क्वेश्चन नंबर 32 a satellite S is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the Earth. Then, satellite अमकंग mass की Earth के कोई कोई रिजल्ट है अभी करी है total mechanical energy of S varies periodically with time है ये वो Earth की कोई बता Earth की कोई बता planet अमक sorry Earth की कोई बता ना कि satellite अमन कोई रिजल्ट पकांदा करी करी नो कांस्टेंट होई तो इसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी सो टोटल एनर्जी कांस्टेंट अमन करी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट अनि से कहता नहीं कांस्टेंट आते ही कांस्टेंट बरोबर सो टोटल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट माने वेरी हार्मोनियस लाल है लीनियर मोमेंटम लाल है लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट बरोबर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होई तो acceleration of s is always directed towards the center of the earth सिटी हम चुम्मी always mama दी की फोर्स को कह दोगे सीधा तुम लागतो ही नहीं so the acceleration will be always towards the center of the earth that is correct angular momentum of the satellite above the center of the earth changes in direction change होते हैं magnitude जो direction जो constant नहीं अदुनो वो angular momentum constant है नहीं l the vector तब से लमो so this again wrong so the option is क्या c the option is c acceleration of the satellite is always directed towards the center of earth question number 33 question number 33 Question number 33. Kaya to siya. Question number 33. Question number 33. The high no? A particle of mass m is projected with a velocity u k times b in a project velocity of projection. So k less than 1 है. That means the velocity of projection is less than escape velocity less than escape velocity होता है कह दो गनी escape तो ngamaroy escape तो उदाबीदा escape तो उदाबीदा माजे maximum height अमा भावो यौरुरे हाइरगा it will stop here so maximum height सीधा सी maximum height नहीं infinity दिना तेरे को से maximum height नहीं here velocity will be zero नहीं so कोई ना कोई escape velocity अमा सुन maximum height तो base तो वो question हो लो हाइरे कह बा नहीं energy conservation पालो हाइरे So at maximum height, velocity will be 0, v2 will be 0. The energy conservation total energy at 1 to total energy at 2 का माना गया 1 की potential plus kinetic तो 2 की potential plus kinetic का माना दोगा kinetic भी 0 सकनी because maximum height था left और नहीं अधिक तारा के दोने पर surface the potential is gmm divided by r kinetic ना half m मागी थागले velocity के square that is k ve का whole square k v का whole square equals to u to the minus g m divided by my height से क्या नो वो तो कहते नहीं से r plus height है this is what we are going to find out
m मचादुदी स्मॉल m लोई कैंसिल तौग्रे अदे कई लेहरे हरो यंगो सिदा स्केप वेलोसिटी की टर्म द एक्सप्रेस लोई तौथोक्सी gm by r सिदी हंजिन जिन होलमनी v स्केप डिवाइडेड बाय 2 नी v स्केप स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ k स्क्वायर v स्क्वायर सी जो कोई ना स्केप वेलोसिटी सागे हरदी माइनस gm by r plus h हाबजे r हम हाफ चलो मतलब तो r हम लोग अदे gm by r दुदी v स्क्वायर बाय 2 ताराबा माइनस v स्केप स्क्वायर बाय 2 अदुगा मथक r मखादा r plus h यानी अदे v स्क्वायर 2 2 2 लोई का करें कई ले रहे थे सीधा k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस k स्क्वायर सोम ददी माइनस r बाय r प्लस h नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई खरा चना करो ए h पुथो कदौनी अदे डायरेक्ट सोम द चक्रो से r प्लस h है देना इक्वल्स टू माइनस r बाय माइनस 1 प्लस k स्क्वायर यंगो k से 1 दे पिकनी जुखांगे पिकनी हायरगा नंगे 1 ना चाव हेंदोइनी चाव बे हेलिबा मानसु माइनस ई बजे फजदे आंसर दसु यारमोय अदो माइनस तो हमतंग मखागी माइनस टू आर इरो मथकिदो अदुग माइनस सिदा 1 माइनस के स्क्वायर सुमाइन इबा याई आइदना से केसु काइदे तो हाइट्स पुथोगे हायरडी आर बाय 1 माइनस के स्क्वायर आर असोम थांग्रदे माइनस आर नाउ सिदा सुक्रियो शोइद्रनगे थांगदोक थांगिन सानरकांदा सुक्रियो शोइद्रन क्या तातोबा मथकता आर के स्क्वायर तारमनी मखादना 1 माइनस के स्क्वायर ताबना त्रो तारमनी तो आर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस के स्क्वायर सात्र खरदी इवेंट सिगी नंगी फॉर्मुला से बाय हार्ट बुक तौरमनी कैसु काइदे जो हयेंग रिवीजन यौसलकांदे बाय हार्ट तौ हाइगे नोट नाउ बाय हार्ट तौसिनबे यारो फॉर्मुला ने गुड अब जे हारो नेक्स्ट डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ विद सेंटर ऑफ अर्थ अब कोई ना हाइग्रे इनसाइड दी r लेस देन r ददी इनसाइड दी r के मनुंग ददी कैदवी नंगी पैराबोलिक ओइना चली हाइरे पैराबोलिक इन नेचर r greater than r dana kari hyperbolic good so the only possible option is c 34 की c क्लास तक कोई डायग्राम ये करे वेरी इंपॉर्टेंट का जो है में हंग्रीवन नेता पांगना को अदुना सुंब खरा जे खंगलो हंगबम लेक्टरम नेना the weight of an object is 90 kg on the surface of earth if it is taken to a height equals to radius of the earth then its weight will become ये सरफेस नंगी वेट ऑन सरफेस सरफेस नंगी वेट से 90 kg वेट हाइवे 8 दी नंगी बॉडी दुगी मास से 90 kg ने हाइनी सरफेस से देखो ये वेट हाइवे जे आई इसा के मास तो खतरा नत्रो हाई जे if my mass is 70 then I will say 70 kg weight to surface adu mata kakhladi man हाई जे add height equals to r da अहान बता g h सान पुदोक्से g h से g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर अब क्या तारे नसाई नंगी h का r का मानक रमें कक्सन नगरो अदि 1 प्लस 1 2 2 स्क्वायर दैट इज g बाय 4 लानी 2 स्क्वायर इज 4 अदि weight and height h इक्वल्स टू r weight तदी केनो weight पो हारडी m अदुगा जगह जगह दुगी g मास क्या तागरे 90 अदुगा सीधा g बाय 4 सीधे यार जी जी कहो सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ आर्ट की जी नाउ अदु तारदे अखोना कीजी वेट क्लास ता याम इंपोर्टेंट होइना सर हायर में कीजी वेट हाबदु पुथोकेडी मागी वेट डिवाइडेड बाय जी सी जी से ना सरफेस की ऑन द सरफेस ऑफ आर्ट वेट से ना जगह दुगी वेट क्या नो तागरे से 90 जी बाय 4 तागरे मखादा सरफेस की जी दुन डिवाइड तौरो अब जी जी का खरे हर का लास्ट क्या आता है 245 22.5 kg ऑप्शन याव माने ओके ऑप्शन यावद्रे तो 35 we will give the grace mark concept तुम खंगौरो यारबा गुड क्वेश्चन सेम कांदा समे खिदंग सोयरबानी नाउ नेक्स्ट
em có lạc rồi ấy sáng phiên ngái lên mày đi jing rồi em không có bắt lôi gì vậy mà một mình please please xem tăng thằng gì đó lại papa lại xem tăng này lôi xem cái con cho nên mà một mình papa hay em bên mà má à ta làm ok si papa xem lôi xem cái con please papa nggak tahu mau sih kamu lo ngatang lem kok ngatang lem Ups, dat is een nummer. Dat is een nummer. Nou, wat nog inderdaad. Ah. Okay, अरे next. Next. इस यहाँ पे पिकअप ले रहे हैं सॉल्यूशन तैयार हुई है कोई रोई से only 30 minutes next question number 37 36 according to Kepler's first law planet revolves around its star in an elliptical orbit शिवा दी सुमे with the star at the center of the ellipse ला लिखो से यार là phó phong đi bấm mà tao sẽ có phải bấm một ui cho cái hàng lại cái nào à đấy sẽ papa chạy lọc sao okay at the with the star at the center of the ellipse is la leva star should be at the one of the foci near so first statement is wrong according to Kepler's third law t cube is directly proportional to r square है ला लिखो से जो t square is directly proportional to r cube near so अनिमक ला ले so both statement are incorrect so option number क्या आ रहा है D statement is D here above statement is D next question number 37 a planet moves faster when it is closer to the sun in its orbit and vice versa नक्सल लिंगे के दवनी ऑर्बिट फास्टर होइना मूव तवनी सुmme total energy of the planet is conserved सिजु सुmme but fast होइना मूव तवरिसे angular momentum conserved तवनी energy conserved तवनी थे यानी अब good so options are correct but independently करेनी option number B कई तो वही fast होइना मूव तवरिने बा conservation of angular momentum aerial velocity same aerial velocity cover tawna ba in equal interval of time gravitational potential of art at every place on it is negative negative with the on its surface था यार अब at every place on it is negative चुम्मे से जो gravitation potential is negative infinity the zero होई तो नहीं यार वादु खगी नंगे कैसा मखंग नहीं but on any other point it is negative every body on earth is bounded by the attraction of the earth good this is chummi and the second is the correct explanation why negative hardy the potential is negative because the system is bounded system so option number A so both are correct and it is the correct explanation 2 is the correct explanation question 39 escape velocity from the surface of two planets of different size could be same different size or जरा escape velocity सब माना हुआ या इमन escape velocity आपसे करके माना है root over 2 gm by r అది మన size खेलने जता आरगा जो if नंगे mass तो है density रोम द खेलने रादी density द मानर जो आई देना g हरगा m हर जे mass
volume into density pi r cube into rho natro divided by r divided by r. अब this sitting ngasagi nagi r r do sida kaksan nare haraga nagi I by 3 pi g r square rho smai irja. So even though size khenas atar gazo if planet anitugi r square rho do same oiradi even though size khenar jo radius lomda chaukaladi यार वो रेडियस टू का r स्क्वायर टू का मल्टीप्लिकेशन टू कांस्टेंट सेम ओइरादी सेम वैल्यू ले रख पे याई डिफरेंट साइज हो जरूर जो इसके वेलोसिटी सो दिस इज करेक्ट को सेम डिफरेंट साइज ले रहे जो सेम वेलोसिटी हो याई नॉट नो इशू इसके वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन बोथ साइज एंड डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट जो मेरे को सिजो एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन because nangi size khakta depend tawba nate density da su depend tawi so density am su nangi r square ani do const ani do mana targadi nangi value will be same ne iske velocity will be same so a option number a acceleration due to gravity decreases faster with depth as compared to height chume air above the surface raises the decrease in g hai sidhe nakai chana la liko this is not a correct explanation yar air laibe damakta g handhaba g decrease tawba do da adom bada laite यार ओके ओके अदे अमगन को सर ये सोई दुरे acceleration due to gravity decreases faster with depth ला लिखो से faster with height है कहता है so both are wrong option number D both statements are wrong यार अब so नुंगसित लाइबे की gravity हंदबा दो अदो मतलब लाइके को से यार next when energy of a satellite earth system is non-zero then satellite will है ये सीधा कोई ना सैटेलाइट का आर्ट का ये सिस्टम से ऑलवेज टोटल एनर्जी से नेगेटिव होएगा ना टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट से करिए माने है कि कोई ना नंगी माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी अदुगा अमना पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 सो इट इज ऑलवेज नेगेटिव होइदोगा बाउंडेड सिस्टम की होइगे हरदी बाउंड तौरगा ऑर्बिट अमद उंगे हरदी नेगेटिव होइदोगा बट मानो क्वेश्चन तो करी हाय रे नॉन नेगेटिव नहीं है माय एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट का आर्ट के सिस्टम तो but definitely bounded when lembe aroi pythos ala madawni so move around the earth in circular orbit not possible just escape to honge hadi escape tang to honge hadi total energy must be zero ni madi non zero hire so it is also wrong move around the earth in elliptical orbit definitely move tauroi bounded system oroi pythos akradawni so the escape with speed escape out with speed some interstellar speed some escape out the taurani at the interstellar speed ama hak the ko yar just escape the tauroi I mai paithokrani yar better option je d tare english ta kidang phajadre adu dum d helasi yar what to fir ye me so the 41 ye option number d 41 ye option d option number 40 question number 42 a satellite of mass 0.2 ton 1 ton has a 1000 kg revolving around Earth has potential energy minus 2 megajoule. Then the orbital velocity put हुआ है. मान पी जगह has potential energy नहीं. अकोई ने खंगे potential kinetic energy का potential का relation ये हो जाएगी इरम्बदु. For a bounded system minus kinetic energy equals to potential energy by 2. अब the kinetic energy क्या आता है हरो? Orbital velocity put हुआ है kinetic हाना put हो. अब the minus from the थांगा minus potential energy by 2. माइनस ऑफ पोटेंशियल दी माइनस ट्वाइस मेगाजूल डिवाइडेड बाय 2 क्या तारे दे 1 मेगाजूल 1 मेगा है डी 10 to the power 6 नी जूल यानी बस देन अदो इतार का दी काइनेटिक एनर्जी है बस दी हाफ एम बी स्क्वायर के सुमाने ऑर्बिटल की स्क्वायर इक्वल्स टू क्या का माना गदा 10 to the power 6 जूल अब देन किस द मास तो दी माना 0.2 टन है रवनी ना 0.2 into 1000 क्या आता है 200 हाफ इंटू 200 इंटू v नॉट की स्क्वायर 2 2 कथन अगर 10 to the power 6 so 10 to the power 2 हम से ले रहे हैं सोंगे 6 का लौथो नरगा 10 to the power 4 लानी स्क्वायर रूट कर दी 10 to the power 2 which is 100 meter per second so the answer is 100 meter per second the answer is 100 meter per second question number 43 escape speed of a body from the earth depends on tagi nagi escape velocity to kana depend togi have escape velocity have kai mane twice gm by r ibama nadraga twice gr ibama
अब दी अनिमक कई तवी मास ऑफ द बॉडी द इंडिपेंडेंट नहीं मास ऑफ द बॉडी द डिपेंड तौदे डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन द डिपेंड तौदे सारा में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अदु दा डिपेंड तौदे but height of location from where the body is launched height to the depend तौवे height वांखली गई surface तक height वांखली गई भी escape decrease तौवे हायरम में so the option is C the option is C the option is C next question number 44 the ratio between the masses of two planets is 2:3 and the ratio between their radii मैं रेडियस में कहीं रेशियो पी रहे मास पी रहे एसर्शन ड्यू टू ग्रेविटी पूछो अद मास यावबा रेडियस यावबदी कइनो g की फॉर्मूला दो रूट ओवर gm by r अद अखोइना g1 by g2 पुथो के दी रूट ओवर नगी मास अनि m1 by m2 द रेडियस दी उल्टा लानी को r2 by r1 मास की रेशियो तो क्या है 2:3 इट इज 2:3 रेडियस की रेशियो ने 3:2 अगर मखादा 3:2 यारबो so it will be sitting nagi 2/3 tarni so it will be 2/3 can toishna the ratio oh sorry so idro orbital velocity की formula में पार ले रहे में formula is wrong g की formula हम साथी ने स्क्वायर में g on the surface is gm by r square होइदो r square atang le ngara mo ko do ga mo ko lau ko papa atang le ko lau ko okay papa har mo चलो अब this is the g ratio नहीं ना हरडी g1 by g2 हरडी नंगी ग्रेविटेशन कांस्टेंट का कथन अगरो m1 by m2 लानी rd मथ मखा ओंथों नरनी r2 by r1 का होल स्क्वायर m1 by m2 दी 2:3 ने हरे r1 by r2 मखा रोंदे ये तारे it is 3 by 2 3:2 का होल स्क्वायर अदे मथक द 2 अहुम याव दो रे it is I मखा दना 3 अहुम that is 27 so it is I is to 27 it is I is to 27 I is to 27 this is the answer question number 45 the orbital angular momentum of a satellite star mark thamoji star mark thamu question number 48 the orbital angular momentum of a satellite revolving at a distance r from the center of the planet is L satellite amakag nangi center of the planet to gi nangi center to the game some distance r cover distance am khakta man asali ba mai kanoji angular momentum do obviously mass is suppose circular orbital में चलें खलो अब मागी velocity the orbital velocity को उधरो vo mass of the satellite ले रहे mass of the planet ले रहे से mass of the satellite हारो m small m the orbital velocity मान p में angular momentum if the distance is increased to 16r that is distance है 16 times होएगी दो रहेगा angular momentum क्या होगा कदगे अब then let's derive a relation between angular momentum and the नगी radius angular momentum है दिखाई क्या माना बा mvr that is mv not r है orbital velocity at a radius r is the root over gm by r ni m is the mass of the planet the m mass of the satellite aduka root over g mass of the planet divided by r aduka somda r atai the loin constant hoine ba same planet oiri same satellite oiri chumna khaki nangi radius so hongba khatani adai smai ibe arba l hai bazi r by root r da depend tawi haidana adai samna l hai bazi 1 root over r da depend toroma khudana toroga so l ji r da depend torobani na when nangi r duna natra smai haise l2 by l1 that is nangi final divided by initial haidi second case divided by first case के angular momentum equals to root over r2 by r1 इवे आरो root over r2 by r1 so r2 to the minus 16 r ने हायरे r1 to r ने हायरे तो क्या आता है 4 so l2 will be nothing but 4 times of l1 which is 4l star mark thamu so the answer is 4l option number 46 a planet revolving around the sun has angular momentum L and a mass m then aerial velocity से कोई कई माने है ग्रे नंगी L by twice m यार बा ऑप्शन नंबर ए
Option number A, L by twice m. A planet has a radius half the. Kaya to siya. Kaya dong sakre. Kaya dong sakre. Kaya to siya. Okay, are. A planet, a planet has a radius half of the radius of Earth. नहीं radius so half the radius of Earth and mass double that of the Earth. नहीं radius to na half है बा तो mass ना double है बा को. अभी तक then the value of acceleration due to gravity at the surface of that planet. So g have जी करेगा माना बाहरो. In general, when any planet among g on the surface is gm by r square. नहीं in a new planet तो g से कोई g दिया सारो नहीं. Gravitation constant होगा रोय. Mass तो क्या होए है रिवा mass becomes double है नहीं twice m. अदुका नंगे radius तो ना half होए गरे है बा. There is r by 2 का whole square. अदुका कहते हैं 2 मतलब सकरो 4 लाओ 4 to the 8 I'd gm by r square. gm by r square हाँ नगे g तो ना त्रो g दुदी 8 की g दुदी 10 लो है रे so it is it meter per second square. it meter per second square option number C. it meter per second square option number C. यार अबू so last two questions, last three questions. Question 48. At what height from the surface of the earth will the g value of g be reduced by के 2 का करने सेक्शन को from the value of at the surface of the earth. मा है जगह g at the height to हाउ क्या लो है बा 36% reduce होन ग्रो है बनी ना हान लेभम थोक बदु दगी 36% reduce हो ग्रो हाडी हान 100 लेरम बदो हाउ 36% reduce हो गिदोरे अब क्या ताई सिदी 64 टावरा 64 टामाने so it is 64 यदि लेम होगा तो 64% of नगी g दुनी that is in other words 0.64 times g है नहीं g तो देखो 3 लोअर से आ रहे सरफेस की 3 ना तो so it is 6.4 meter per second square ता हालो है सी तहान गेडे हाइट अमर दे यों पी रिवा हाइट में आप जिंगे किलोमीटर चाव रहे अदुन स्माइल लो जी नगी g है रगा g times 1 plus h by r का होल स्क्वायर है इधर यार वो गुड g दो कोई साइज माइनस कोसिदा g इरमन फदो माले 0.64 g है कंगना दो ले रेदना g का करो अब अनिमक दो कोई स्क्वायर रूट लो रजे स्क्वायर रूट क्या तारे मखा द 1 plus h by r ले रनी 0.64 जी 0.8 क्यों रमनी आई आई जा 64 ना त्रो अब आई है बस जी आई सुमाइनो इवदे करिकाय 8 by 10 है दना कथा खोदा ना तोरगा 4 by 5 यार वो न 5 में सोम द क्रॉस अक्रो 5 equals to 4 sum ladi 4 plus h by 4 times h by r 4 times h by r 5 to sum 4 to sum the lacro 5 minus 41 dare 1 equals to 4 h by r अब the h है कहीं के मान रहे मैं r by 4 r d 6400 divided by 4 अब क्या आता है 41600 1600 किलोमीटर अस्सी तो सोए आम जाए the answer should be 1600 kilometer सीधा जीरो ओम हेंजला में जीरो ओम हेंजला में ये लफ्ज़ आने फरे फरे यार आंसर डी तस्वीर बदी 1600 ओरदाउनी जीरो ओम हेंजला में ना एक ग्रेस पी दे यार the slope of the graph t square versus r cube t square versus r cube है t square है वैसे equals to constant दो t square है वैसे Kepler's third law ना r cube दा depend तो है यार equals to इबकान तो कोई ना है ग्रेस दी 4 pi square divided by gm ता दो m से ना mass of the नंगे कनो दोगे star दोगे r cube अदी ना होरेन ग्राफ एक कांदा t square versus r cube है कांदा सिना y नी सिना x नी सिदी y equals to mx ना थ्रो where m is a slope and m है जो करेगा माना बा 4 pi square by gm so the slope will be 4 pi square by gm 4 pi square by gm option number A. Last question. A comet moves in an elliptical orbit with an eccentricity around a star. Eccentricity की दाई फॉर्मूला डायरेक्ट हम ये हमने तो तुम सीनर से distance between the perihelion and the aphelion सीना नियम तो नो क्वेश्चन को ना आएगी नहीं ऐसी ना रोए if the speed of the comet at the perihelion why नक पर जगादा
क्वाई नक्प जगह सिद नंगे स्पीड तो v नंगे क्वाई नक्प तो कई है पेरीहिलियन है क्वाई लाभ की बदनो कोई v एफेलियन क्वाई लाभ की बदो then the speed of the comet at the aphelion that is farthest point and then nagi vp divided by v nagi aphelion that is v maximum divided by v minimum will be 1 plus e divided by 1 minus e see formula direction ho hai e to the mana kya nahi log rahe 0.2 so 1 minus 0.2 so the 1.2 divided by 0.8 which is 3 by 2 the VP is the VP is a perihelion velocity it is IT1 divided by VA will be equal to 3 by 2 the VA pamadi 2 from the sacro 2 into IT1 divided by 3 3 is that 27 which is 54 so the answer is 54 kilometer per second option number D yeah Rabu yeah so this is the end of our discussion is the lower question the answer the kitang sena bakhara yaw mein for which I need to give some grace mark of question kharagi fare no ye question jai scan tawbada mo issue khara laidoi si OMR da ari bo OMR si nagi ba santa khara ju yawre aduna result da kitang de mu thengda da yaroi amu manually sana loina mu fill tawda yaroi ko santa yamna no ye all OMR si na ba yawre and mathang dai di nagi new OMR khatang si no kai yumba soidana pira ga ju no emtang change ta hoga da ba fare ngasi ki sida discussion loire hayeng Sunday hayeng ko hayeng sima thermal properties of matter की अखोई last lecture लेगनी नुंगदांगदा नगी radiation की मतंग दुमा को radiation दुमा hayeng लोशलनी which will be the last lecture regular lecture लोयनी सिदगी देखो हना की week सिमा online class ले रोए मखा तनम तो रोए next week तगी next Tuesday तगी को we are going we are going to start or launch a new series सिने fully online होएगनी अदुगा सर की ऐप को ऐप की आईडी के ये सर इशू तो आ गया YouTube तदी सर था दो मांद्रे सो 30 क्वेश्चन सीरीज की एवरी डे 20 to 30 हरगे सो सम 1 to 1.5 hours पुंग अमा दगिना पुंग अमा मखाई भावगी होइबा क्वेश्चन सीरीज हाइतारे क्वेश्चन खत्तगी होइबा सीरीज अमा सर लॉन्च तौरनी को सुनो ये ऐप की आईडी के ये पिरागे अदुनो जॉइन तौरो फरे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक लोशलेजिंग असिगी सिदा सी यू टुमारो बाय बाय गुड नाइट Sir, sir, question number 49 gise option the C or either. 4 49 pi की option ओके answer ओके is ओके हाँ 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 4 पाई स्क्वायर by जी एम अचौबो होइदो जी एम अचौबो ओके ओके चुमे 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 द आंसर शुड बी सी द आंसर शुड बी सी यार अब दे चेक से लाउड द आंसर thank शुड you. बी फरे लोशलजी बाय बाय गुड नाइट